तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल. Yes, sir. Am I audible now? Yeah, you are. Yeah. So Rohan was the sales head of a FMCG company. Due to COVID-19, the sales of the company had subdued in the last financial year, and the top management was concerned regarding it. As the sales head, he chalked out a plan to increase the revenue. He hired a data analyst team to know the spending trends of the people and focused more on those products. He also improved the marketing strategy by providing discounts on various e-commerce platforms. He analyzed the sales monthly and worked extra hours to motivate the team. Due to his consistent efforts, the sales of the company increased by 60%. Absolutely fine, no issues at all. The only observation I have here is that, that this situation you see in the picture is that there are people, anxiety is written on the faces of everyone, in a Yes. meeting. Till one person comes up with all the bright ideas and then things get resolved. This is what the picture is conveying to us. Is that correct or not? Yes, sir. So, though your story is on the right lines, this kind of thing has not got created. Okay. You're getting the point? Yes, sir. I have mentioned that the top management was concerned, but not very specifically, right? हाँ, कि इधर डिस्कशन में ये बात हो रही थी और वो नहीं मिल रहा था, फिर इसने बताया ऐसे ऐसे है, and then the top management approved of this idea, and then think, you got success. Understood, sir. Yes. Yeah. Anyone else? Any points? Chalo, फिर next. So this is the second picture. Yeah. Ram was a diamond polisher working in a factory in Surat. He liked his work and was very ambitious to reach the managerial position in his company. He worked hard day in and day out to hone his skills. He also frequently interacted with his senior polishers and gained insights. His quality of work was appreciated by his manager. Owing to his sincere efforts and cordial relations with the workers, he was made the head of the polishing department in 2 years' time and led his team efficiently. Okay. Just bring the picture into focus again. Now, this story is not appropriate. This story is somewhat a creation of the thought process which comes from the coaching academy. Because coaching academies, they tell you कि picture देख के कोई एक thread पकड़ लो और फिर उसमें ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कुछ दिखा दिखू के वो कर दो और बी वेरी हैप्पी कि तुमने बढ़िया काम कर दिया. अब इस तस्वीर को आप देखो, ये कहीं से भी क्राफ्ट्समैन नहीं लग रहा है और पीछे जो पॉट्स पड़ी हैं उनकी भी कुछ रेलेवेंस है. अब कोई भी डायमंड पॉलिशर और उसको जो काम करने वाले वर्कमैन हैं वो पॉट्स में ऐसे डायमंड नहीं रखते हैं. तो ये लग रहा है कि कहीं इसे जो है ये कहीं से खजाना या कुछ छुपा हुआ धन मिल गया है. सरप्राइजिंग चीज ऐसा कुछ हुआ है. Does this picture not give you this kind of an image? Yes, sir. तो फिर क्यों करते हो? क्यों ये कोचिंग एकेडमीज की तरफ भागने की टेंडेंसी क्यों होती है आप लोग? क्योंकि वो सेफ लगता है, क्योंकि सभी वो कर रहे हैं, है ना? Yes. भाई इस तो देश की ही डिफॉल्ट सेटिंग बेवकूफी की हो रही है. ये देश ही वो सेंगोल की बात करे जा रहा था. अब सेंगोल से घंटा क्या होगा डेमोक्रेसी में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटिश सेंगोल? वो पूरा देश बात कर रहा है, यहाँ से आई वहां से आई, जवाहरलाल नेहरू का ये करता था, फलाना करता था, अब इसका ये होगा एंड ऑल दैट बुलशिट. उस पर दंडवत प्रणाम हो रहा है. डज इट मेक एनी सेंस इन अ डेमोक्रेसी? No, sir. It's absolute nonsensical idea. But the entire country is going gaga over this bullshit.
तो आई मीन आई डोंट ब्लेम यू, बट आप देखो इस पिक्चर को, जो मैं बोल रहा हूँ कि गलत बात बोल रहा हूँ कुछ? Yes, sir. At the first place, I even thought of, making the story about, a hidden treasure. But हाँ, पर आपको वो सेफ नहीं लगी, है ना? yes, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, इस कंट्री को सेफ लगता है बेवकूफी की बात करना। डोंट डू इट। जो कॉमन सेंस आपको दिया हुआ इनेट सेंस, उसको यूज करो यार। Now with after I have shared my thoughts, don't you find the what you have written is not very sensible? I yes, mean sensible तो ठीक है, not relating that much to the picture यार। yes, कहाँ से क्राफ्ट्समैन लग रहा है? आई बात समझ में? yes, sir. कॉमन सेंस पे चलो के you'd be better off। Sure, sir. चलिए नेक्स्ट। So this is the third picture. Ram was a class 10 student studying in a small village. He was taught in school regarding a compost pit, its preparation methods, and its advantages. He got fascinated and decided to make a compost pit in the backyard of his house along with his sister. Firstly, they dug out a hole around 2 meters deep and started filling it every day with the kitchen waste and other garden waste. He made sure that the water was added regularly to maintain the moisture content. Then he covered the waste with the soil and let it decompose for 15 to 20 days. After 20 days, it was ready and was used by his father as organic fertilizer in the fields. Now this is absolutely okay. अब यहाँ पे जो ये कोचिंग वाली चीज थी, ऑर्गेनाइजिंग दिखा दो, ये फिट इन हो रही है, बट इसको एक डिफॉल्ट चीज लेके मत चलो कि इसे सेट कर देना है हर जगह जाके। ये सेट करने की चीज जो है ना, ये डुबा देती है और इससे पता चल जाता है कि कोचिंग वाला बंदा है। Yes, sir. Getting the point? Yes, sir. I have seen, people writing stories about Swachh Bharat with this picture, which does not relate, I think. It does not relate. It is relating better to what you are saying. That point is valid. Yes. It could be वैसे जो है कि ये कुछ अपना, हाँ वैसे ओके जो आपने स्टोरी, मेकिंग सेंस। चलिए नेक्स्ट। This is the fourth picture. Aryan was an officer posted in Jammu and Kashmir. One day he got an intel regarding the presence of terrorists in a nearby forest area. He amassed his troops and went for an operation to neutralize the terrorists. During the combat, one of his soldiers got hit by a bullet in the leg and was critically injured. He quickly rescued him and gave him first aid. He made sure that the bullet is not stuck inside the body. He informed his base regarding the incident and asked for immediate evacuation of the soldier. Finally, he completed the operation, returned to his base, and checked on his soldier. ठीक है चलेगा, ओके। Sir, just one doubt. ये जो पीछे चिमनी जैसा दिख रहा है, I could not relate it to the story. हाँ आप नहीं कर पाओगे बिकॉज, बट ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रिक किल्न्स है या कुछ फैक्ट्री फैक्ट्री कुछ चीज है विच यू कांट मेक आउट। Yes, sir. But इसके हाथ में weapon भी दिख हाँ रहा है. हाँ, इस सोल्जर से रिलेट नहीं हो रही भाई, फैक्ट्री वर्कर तो हो नहीं सकता ये, Right. ठीक है ना? तो उसको आपको इग्नोर करके चलना ही सेंसिबल रहेगा, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटिंग टू दैट। Okay, sir. That parts of the picture do not make sense with the soldier. Okay, sir. होती है कि ये गांव शाव के टाइप जो स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, इनमें भी ब्रिक किल्न्स होती हैं। Yes. Okay. Yeah, Sir, I have an idea for this picture. go ahead, go ahead. Like this he is from the United Nations Indian contingent and posted in the Iraq. And while on the patrolling, he found the mass grave
and he reported this matter, and they found various other mass graves. हो सकता है, that's also okay, yeah. Possible. That idea is okay. चलिए next. So this is the fifth picture. Yeah, In my stories, Sham was a young instructor at a police training academy. He was given the responsibility of training and guiding a new batch of young inspectors. He made a rigorous plan to improve their physical strength and made sure that everyone was in good shape. He also briefed them about the documentation and other pieces of the police station. He made sure that the inspectors were dressed properly as it reflected the discipline of an individual. The inspectors were very thankful to him for his support and passed the academy with flying colors. no issues at all, absolutely fine. Yeah, absolutely fine. Sir, here as well, he's handing over a chit or something to some personal, so which is also not shown in the story. So, and a bike is also shown. So, ये क्या है ना, अच्छा, since आप एनसीसी में नहीं रहे हो ना, no, sir. क्या होता है ना, एक बड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जब आप एनडीए या ओटीए जो भी ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करोगे, तो एक परेड स्टेट हमेशा बनती है कि इतने लोग जो हैं पोस्टेड हैं, उनमें से इतने हाजिर हैं, इसमें 2-4 बीमार हैं, ये इधर-उधर हैं, कोई व्हाटएवर, तो दिस इज ही इज हैंडिंग ओवर टू हिम, ही वुड आस्क के रिटन में दे दो, नहीं तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जो विजिटिंग पर्सन होता है, orally he hears it and that's it. So in this case he has said कि ये written जो परेड स्टेट है ये मेरे को दे दो, जो कागज में लिखी हुई है आपने, that's all. Okay. तो ये बिल्कुल ही रूटीन एक्टिविटी है ऐसे सिचुएशंस में ना. Okay, sir. हाँ, मैंने एनडीए फर्स्ट टर्म से ही ये देखता आ रहा हूँ, तो यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग आई वुड हैव सीन दिस थिंग हैपनिंग ना. Yes, sir. So one thing here, the like boys standing in the line, they are wearing a tie also. It's look like a tie. So it's do not relate with the inspector or police inspectors. अब यार आप मुझे बताओ, ये और यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है. Right, sir. अब ऐसी यूनिफॉर्म में टाई हिस्सा होता ही नहीं है. Yes, sir. पर सबने पहनी हुई है, तो यूनिफॉर्म भी है. It's और like a scouts. यार जो भी हो, अब ये जो विजिटिंग वाला बंदा है जो परेस्टेट ले रहा, उसने भी पहनी हुई है. Yes, sir. ठीक है ना. Right. तो अब पता नहीं, अब फिक्टिशियस चीजें हैं उसमें डाल दी, ठीक है ना. Okay. और टाई भी छोटी छोटी सी है ना. Yes. अब ठीक है, यू नो, दिस इज लाइक व्हाट यू कैन से ना, आर्टिस्टिक लेसन्स. जो आर्टिस्ट को बनाने को दिया, उसको नहीं पता था, तब क्या करोगे आप. All right, sir. I haven't seen tie in this beret belt के साथ tie भी. बट अब है तो है, क्या करोगे. It is there, it's a reality. Okay, sir. सर स्काउट में भी परेड स्टेटमेंट लेते हैं. सब जगह यार, कौन सी जगह नहीं. स्काउट भी गलत नहीं है. एवरीवेयर, वो फौज का ही सिस्टम है हर जगह. या चलिए नेक्स्ट. This is the sixth picture. Rajat was a final year student pursuing mechanical engineering. He was shortlisted for an interview of one of the automobile companies that had visited the campus placements. As it was his first interview, he was very nervous. He prepared his course subjects well before the interview. He also practiced answering the questions in front of the mirror to reduce nervousness and increase confidence. During the interview, he practiced deep breathing and answered the questions calmly. His interview went well and he was selected in the company.
ठीक है, no issues, fine. Sir, I had one doubt regarding the length of the story. Is it fine, right? ठीक है. Okay. Sir. चलिए next. So this is the 7th picture. Aryan was an officer posted in Assam. One day, he was ordered by his CEO to carry out a counter-insurgency operation. He selected a team of young, brave soldiers and reached the spot. He divided his team into 3 parts and searched the whole area. Finally, he located the hideout of the militants and engaged them. He neutralized them within 3 hours and informed the CEO about the successful completion of the operation. He and his team were happy with the operation and returned back to the base. Okay. Okay. Sir, in this picture, they seem to be a bit young. So, can we make a story regarding NCC as well, NCC camp? ये क्या है ना, एनसीसी में होगा तो ट्रेनिंग एक्टिविटी बतानी पड़ेगी आप. दैट इज ऑल. अब आपने ऑपरेशन की बात कर दी है, क्योंकि इसमें क्या है ना, फनी काइंड ऑफ अ थिंग, इसमें दोनों तरफ से दिख रहे हैं ना लोग. Yes. एक से ही ड्रेस वाले हैं और बिल्कुल ही नजदीक, ये इधर को हथियार लेके जा रहा है, वो उधर से सामने से भी एक आ रहा है एलएमजी लिए हुए. तो वही Yes. ना, आर्टिस्टिक वो है लाइसेंस वाली चीजें. Okay. So this perception is correct. Just that what अगर आप ट्रेनिंग की बात कर दो या ऑपरेशन की बात कर दो, दोनों बातें ठीक है. Okay. Okay. Sir. चलिए नेक्स्ट. This is the last picture. Raj was a 12th science student and wanted to pursue computer engineering from a prestigious college. He worked hard and scored good marks in boards and was to appear for his JEE mains exam in 20 days' time. He revised the concepts thoroughly and cleared doubts with his friends. He practiced PYQs to increase his confidence. He gave mock tests to get a feel of the exam. Finally, he performed well and got an admission into an IIT. He celebrated his success with his friends by playing board games. ले आओ पिक्चर को. Sir, here I could not figure out what this middle structure kept on the table is. Even I can't figure out. ये केक है, ये क्या है? ये तो क्यूब सी तो रखी नहीं होती. केक अगर होता तो ऊपर वाला भी राउंड सा होता. बट कुछ काटने वाटने का नाइफ वाइफ भी नहीं रखा है. एनीवे, तो ठीक है, कुछ तो बातचीत करके कुछ कर रहे हैं तो वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है. से इसमें भी आर्टिस्टिक प्रॉब्लम. अब नहीं, क्या कर सकते हैं. हाँ, बट ऐसा क्यूब टाइप नहीं होता ना केक का शेप. मैंने नहीं देखी. यस सर, वैसे केक लग रहा है पर हो भी सकती है, क्या कर सकते हो. ठीक है. I perceived it as a board game or something like that. चलो, आई विल नॉट फॉल्ट यू, क्योंकि केक होता तो कुछ नाइफ शाइफ होती, प्लेट्स होती, आई मीन इट डजंट कंप्लीट द थिंग. अब Yes, केक को कोई हाथ से तो नहीं काट देंगे ना. right, sir. Sir, can it be a gift box? पॉसिबल, बट वंस अगेन गिफ्ट बॉक्स में शेप देखो. Maybe the small one may be a watch and big one may be another thing. So 2 gift set. हाँ, मतलब कंजेक्चर तो बहुत सारे हो सकते हैं. मतलब शेप तो इसकी ऐसी है, बीच से चक्की टाइप पर राउंड नहीं है, बीच में गैप नहीं है. एनीवे, लेट अस नॉट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम. कई चीजें हैं व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिसाइफर, तो उसको देखो क्या नियरेस्ट लेके आपको काम करने का है. अदरवाइज यू कीप वेस्टिंग टाइम इन दैट. डोंट वेस्ट टाइम. उतना भी टाइम नहीं है लाइफ में. बिकॉज
if you spend 10 minutes, you'll still not come up with a very, very great idea about this. This is not worth it. Take Kamlesh. सर मैंने तो इसको अवॉइड ही कर दिया. मैंने तो ये बनाया था कि ये दोनों बंदे हैं, दोनों भाई हैं और सीडीएस में दोनों रिकमेंड हो गए हैं. Fine, fine. पेरेंट्स Okay. थोड़े से कंसर्न थे तो उन्होंने कन्विंस किया कि बोले इट विल बी अ गुड लाइफ. वन वाज इन द एयर फोर्स, द अदर वन वाज इन द आर्मी, सो दे जॉइंड आफ्टर आपका भी कन्विंसिंग देयर पेरेंट्स. स्टोरी बड़ा सेंसिबल है, क्योंकि ये जो है ना कॉर्नर्स में जो है वो कुड भी बड़ी उम्र वाले लग रहे हैं एंड ये यंगर लग रहे हैं. दैट इज मेकिंग सेंस. ठीक, तो ओके, हाँ अवॉइड कर दिया, फाइन. डोंट गेट इनटू दिस कॉम्प्लेक्सिटी जो समझ में नहीं आ रहा. सो योर स्टोरी इज ओके कमलेश. चलिए आगे. I've also written a blank story. हाँ फाइन. Ashish was pursuing mechanical engineering from a college in his hometown. He was a cricket enthusiast and was selected in his college cricket team in the first year. Due to his poor performance and inadequate fitness, he was removed from the team. He did not lose hope and decided to improve on his bowling. He started running and doing strengthening exercises to improve his fitness. He watched various YouTube videos for improving his action and wrist position. He bowled at least 10 overs a day so that his line and length would be accurate. Due to his good performance in the trials, he was selected again in the third year and led his team to victory. Absolutely fine.